Rancidity. It is the process of slow oxidation of oil and fat present in the food material, resulting in the change of smell and taste in them. Means हमारे एनवायरनमेंट में जो भी ऑक्सीजन है उसकी वजह से जो हमारा फूड है उसमें बैड स्मेल और बैड टेस्ट आ जाती है. इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं. हमारे फूड में ख़राब स्मेल और ख़राब टेस्ट थोड़े टाइम बाद आता है. एंड वाई इट हैपन स्टूडेंट्स? बिकॉज as time passes by, the oxygen present in the environment reacts on our food and it oxidizes the food. That is the slow oxidation of the oil and fat present in the food items makes this bad smell and taste to occur. So there are various methods which helps us to prevent the rancidity. First, packing of food material in airtight containers. दैट मीन्स हम अपने फूड को यू नॉर्मली ऑब्जर्व स्टूडेंट्स एयरटाइट कंटेनर्स में पैक करते हैं. ऐसा क्यों एंड वाई इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी? बिकॉज स्टूडेंट्स पैकिंग द फूड इन एयरटाइट कंटेनर स्टॉप्स द कॉन्टैक्ट ऑफ फूड विद द सराउंडिंग एयर. अब जो हमारी एयर है आसपास की उसमें मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, तो उस सराउंडिंग एयर से हमारा फूड एयरटाइट कंटेनर में कांटेक्ट में कम आता है और बचा रहता है, जिससे वो फूड थोड़ा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फूड प्रेजेंट. सेकेंड इज़ बाय डूइंग रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड. अगर हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर्स में रख देंगे, the same would be the reason that in refrigerators the speed of the air molecules or the gaseous molecules around the food is quite slow at low temperature. क्योंकि जब लो टेम्परेचर होगा तो फूड की जो एयर मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाएगी, उनके मूवमेंट की स्पीड, जिसकी वजह से जो फूड नॉर्मली आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर अगर एक दिन में ख़राब होता है तो इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इट टुक 2 to 3 days. वाई? बिकॉज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एट एज वेल, बट एट लो पेस, लो स्पीड. द थर्ड process by which we can prevent the food to be rancid is by packing the food item in nitrogen gas. So all the wafers or packet chips, whatever we eat, are packed with the nitrogen gas. Why? Because nitrogen is inactive. Nitrogen just makes a layer through which oxygen doesn't get passed away. So if nitrogen is filled in the wafers or packet food items, it does not allow oxygen to come in contact with the food item and hence prevents oxidation. The fourth is by adding antioxidants. For example, BHA, that is butylated hydrated anisole, and BHT, butylated hydroxy Toulene. These two are common antioxidants which prevents the food items to be rancid. And the last method is by avoiding the food materials and cooked food keeping in direct sunlight, as if we keep the food in direct sunlight the rate of oxidation increases. So if we avoid the food keeping in the direct sunlight, it will rancid later. So students, these were the following methods which prevents rancidity.